Namaste everyone. Hope all of you are well. And today we are going to discuss lattice enthalpy. In the previous lectures about the types of reaction enthalpies, we have learned about some of the reaction enthalpies like combustion enthalpy we have gone through. After then we have standard enthalpy of combustion, enthalpy of atomization, bond enthalpies, enthalpy of solution. These are all the things we have studied in our lecture number 8. This is our lecture number 9. In this video, we are going to discuss especially about the lattice energy and what the things we have learned in the chemical bonding. Just a second, actually I get a pain in ears. So whatever the things we have learned in the chemical bonding in the topic of Born-Haber cycle, in this video we are going to understand about that Born-Haber cycle. See what happens. You know very well what is Born-Haber cycle, what is Hess law. Hess law, as I have informed you in the earlier videos, that when any chemical reaction, if it directly completes in one step, and sometimes we show more than 2 or 3 steps. Similarly, here you know very well, sodium chloride, when it dissociates, it becomes sodium plus and chloride minus. But if I ask you question, dear student, in sodium chloride, if you dissociate, where it will be dissociated? It will be dissociated in the aqueous solution. As it will be dissociated in the aqueous solution, now can you tell me sodium plus or chloride minus ion is in aqueous or gaseous state? Why I am asking you this question? Because this whole things are related to our topic that's called lattice enthalpy. It is denoted by delta H minus, and here we have to write lattice. So this is called lattice enthalpy. See, I hope that in this thermodynamics chapter we are especially discussing about these enthalpies. These enthalpies are nothing. It is a form of heat, you can say, which works internal energy. So in the first law of thermodynamics we have discussed also delta U is equal to Q plus W. Now this Q delta H, now we are moving towards the relationship of this delta enthalpies toward these relations. Yeah. So now in this lattice enthalpy, the things which we want to learn is, what is lattice enthalpy? The lattice enthalpy of an ionic compound. Where it will be occur? Yeah, one more thing, that is the important thing, it will occur in ionic compound. So the lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occurs when 1 mole of ionic compound dissociate into ions in gaseous state. Means when an ionic compound, 1 mole of ionic compound dissociates into ions in the gaseous state. As I have asked you the question, dear student, as you will take a salt, that trivial salt, sodium chloride, and you put into the aqueous solution. Just suppose this is water. This is a water bottle. In this water bottle, I have taken here some of the salt. I have taken some of the salt here, and I put this salt into it, and I try to stir this solution. Means I make this solution salty solution, salt solution. Now you know very well, when this salt has been dissolved into this bottle, into this water, into this aqueous, now they will separate, they will dissociate into the sodium plus and chlorine minus. In the previous lecture, I have informed you, while dissociating, their structure is being distorted. They are not being at the positions wherever. As in the previous lecture, I have shown you sodium chloride structure, how that sodium chloride ionic compound structure is there. Similarly, when you dissociate these ions into the aqueous solution, they are not retaining at the same positions. They destroy their position. Destructed shape and structures occur at that time. So here the lattice enthalpy, the amount of energy you can see, the lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy which occurs
especially it is the enthalpy change which occurs when 1 mole of an ionic compound dissociates into ions in its gaseous state. So you have understand what I mean to say and what I'm going to show you today. I just want to show you that sodium chloride converted into the sodium plus gaseous ion and chlorine minus gaseous ion. So let's begin. So first of all, in this lattice enthalpy, we are going to learn two things. That is, according to the Born-Haber cycle and Hess law. Directly we can't say anything. It is an experiment. By the experimental proof, whatever the lattice enthalpy energy we have got it, that thing only we can write. We can't write any other thing. Without experiment, none of the things are written in your chemistry book. Remember, first of all, science is an experimental subject, and in science, if I talk about chemistry, chemistry is 100% an experimental subject. Each and everything, whatever the things are written in your textbook, either if I talk about the delta H sublimation, delta H lattice enthalpy, delta H bond enthalpy, bond dissociation energy, each and everything has been experimental proof. Similarly, if I talk about the lattice enthalpy, whatever the things I have written here, delta H lattice, delta H ionization potential, delta H ionization enthalpy, bond enthalpies, everything is an experimental proof. Without experimental proof, none of the things is written. Now you will tell me, sir, how we will calculate? But I have already informed you that there are some measurement machines, as I have shown you that calorimeter in the two previous lectures. I had described you also about that calorimeter, how we measure the energy into the kilocalorie, where are that machine, how that bomb is there in that machine, how we measure when we immerse into the water. Have you remembered the things which I have already explained into the previous lecture? Similarly, here we are moving towards the Born-Haber cycle. Now in the Born-Haber cycle, first of all, you know very well, directly sodium chloride is also not formed. Sodium, which is just like a wooden small particle, it is dipped into the KY, that is kerosene oil, because it is very extremely highly reactive element, sodium, and it is very light wooden like particle. If you may have seen in your chemistry lab, then you may be knowing that how sodium solid particle is in looking, right? You can see my looking is very much different from sodium, because I am not sodium. Sodium is very reactive, and some of the persons are also very reactive. If you say anything, either good or bad, it directly reacts, right? Similarly, if I talk about the sodium, it is an element. When it reacts with oxygen or the sodium oxide, if you just take the sodium and open this fist, suddenly it will burn. Have you seen in the olden days that some babas are doing like this and they are throwing something and the fire catches? That is nothing else, that is the sodium. Okay, let's go ahead. So here in this Born-Haber cycle, remember the rule, Born-Haber cycle. Before Born-Haber cycle, I would like to tell you that sodium chloride, when it is dissociated into sodium plus and chlorine minus, that is in the solid state. When this solid state changes into the sodium plus gaseous state and chlorine minus gaseous state, that time the lattice enthalpy is 788 kilojoule per mole. Now about this only we are going to discuss. So here you can see in the Born-Haber cycle, first of all, sodium is in solid state. Which state? Sodium is in solid state. And have you remembered the word ionization enthalpy? The minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. As I have already informed you in the previous lecture, in the solid state you can't directly take out any electron. For that you have to take that element into the gaseous state. So here sodium is in solid state. Now we have taken this sodium to the gaseous state with the help of sublimation process. Which process? Sublimation. Solid directly changes into the gaseous state, that is in the sublimation. For that, the lattice sublimation enthalpy is 108.4 kilojoule per mole. Means from sodium solid to sodium gaseous atom, I require 108.4 kilojoule per mole.
sodium solid to sodium gases, delta H sublimation 108.4 kilojoule per mole. Now this sodium is in gaseous state, it's ready to remove an electron. Remove an electron means ionization potential. That is, you can see here, that is the ionization potential enthalpy here given. Now from this sodium gaseous state, I remove one electron. So what will happen? Sodium plus in the gaseous state and one electron in the gaseous state, as I have removed from the sodium gaseous state. Sodium to sodium plus one electron. So to remove one electron, the minimum amount of enthalpy is 496 kilojoule per mole. How much? 496 kilojoule per mole. Means from sodium solid to sodium gaseous 108.4 kilojoule per mole, and from sodium gases to sodium plus gaseous state, that is 496 kilojoule per mole. You can ask me, sir, why this much more energy? Because solid to gaseous it is only 108.4 and you are removing one electron, so it will require this much energy. Yes, dear student, to remove one electron from an isolated gaseous atom, you require more amount of enthalpy, that is 496 kilojoule per mole. Now, here chlorine exists in the Cl2 form. I have taken this Cl2 half molecule. Now for half molecule Cl2, I have converted into the Cl gas. So here half bond enthalpy is 121 kilojoule per mole. How much? 121 kilojoule per mole. So you can see here 121 kilojoule per mole for half Cl2 to Cl. Half Cl2 to Cl gaseous ion, because Cl2 exists in the gaseous state. So that's why half Cl2 Cl gaseous ion is 121 kilojoule per mole. That is delta H bond. It means bond enthalpy 121 kilojoule per mole. Already we have discussed in the lecture number 6 about the bond enthalpy. Now this Cl gaseous element accept one electron. That is called ionization enthalpy, the amount of energy required to accept one electron. So here, to accept one electron from Cl gaseous state to Cl minus, so that is ionization enthalpy. You can say electron gain enthalpy, means one electron here Cl is gaining. To one electron it will lose. It has to remove 348.6 kilojoule per mole. Means first of all, half Cl2 has been converted into Cl gaseous ion. Now Cl gaseous ion is accepting one electron, means electron gain enthalpy. So that's why it has to remove 348.6. So that's why here written minus 348.6 kilojoule per mole. So now the two things we have got it, that is sodium plus gaseous and Cl minus gaseous. Now this sodium plus gaseous and Cl minus gaseous means this gaseous atom I am going to convert into the solid state. You can ask me here electron gain enthalpy, as you can see here. This electron gain enthalpy in the term of thermodynamics is that ionization enthalpy or electron gain enthalpy. Now we are going to arrange this sequence into the Born-Haber cycle. Means Born-Haber cycle. This 4 sodium solid to sodium gaseous to sodium ion gaseous, half Cl2 to Cl, Cl to Cl minus gaseous, Na plus gaseous plus Cl minus gaseous to Na plus Cl minus ion sodium. So this is the lattice enthalpy total. Means here now this both the ions are in gaseous state into the ion, sodium plus and Cl minus. Now they are going to become a sodium chloride compound into the solid state. So that's why the total amount of enthalpies, the lattice enthalpy is equal to, first of all, 108.4 plus 496 plus 121 minus 348.6. That is total is 788 kilojoule per mole. To form 1 mole of sodium chloride solid atom, you can say that 1 crystal of salt, नमक का एक दाना जो होता है, 1 crystal of this sodium chloride solid
the lattice enthalpy is 788 kilojoule per mole. ऐसे नहीं बोलते हैं कि ये खाने से इतना किलो एनर्जी we are getting. Are you understanding the process or not? Whatever the things you are eating, there is written that you eat Maggi, so you get 2 kilocalorie energy. कोई पूछता है ना इतना कैसे होता है, कैसे क्या होता है? So here the details according to the Born-Haber cycle you can see applying by the Hess law. The total amount we have got here in the lattice energy is 788 kilojoule per. Now sodium plus and chlorine gaseous are. Now you can ask me, sir, क्या इनका इंटरनल एनर्जी जो होता है, मतलब याद कीजिए सर, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस P डेल्टा V, और P डेल्टा V को हमने किया था NGRT. yes. तो यहाँ पर क्या होगा? Here the internal energy is smaller than 2RT. 2RT. Here the internal energy is smaller than 2RT. That's why here the value number of moles Mg की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है 783 किलोजूल पर मोल, मतलब डेल्टा Mg की वैल्यू जो है 783 किलोजूल पर मोल. अब पूछोगे सर ये है क्या? ये इंटरनल एनर्जी 2 मोल से छोटा है, इसीलिए यहाँ पर 7. अब आप मुझे पूछोगे कि सर इसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सॉल्यूशन बनाने में क्या सब लगेगा? तो लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन, ये जो आपका लैटिस एंथैल्पी है, जो नमक जो सॉलिड क्रिस्टल है वो, और जो पानी का जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो. तो आप पूछोगे सर 1 मोल सोडियम क्लोराइड हाइड्रेशन में कितना एनर्जी लगेगा? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. हाइड्रेशन 1 मोल सोडियम क्लोराइड के लिए, फॉर 1 मोल सोडियम क्लोराइड लैटिस एनर्जी जो है हमारा 788 किलोजूल पर मोल है, और हाइड्रेशन के लिए 784 किलोजूल पर. याद रखना डेल्टा H माइनस की वैल्यू जो है, डेल्टा H माइनस वैल्यू माइनस 784 किलोजूल पर. याद है माइनस 784 किलोजूल पर. तो अब आप मुझको पूछोगे कि सर सॉल्यूशन बनाने में कितना लगेगा? अब मान लीजिए जैसे मैंने बताया था, इसमें नमक का क्रिस्टल मैंने लिया, सॉल्ट क्रिस्टल, इनटू द वाटर डिसॉल्व. हाउ मच एनर्जी? तो बस इस दोनों को जोड़ देना है. डेल्टा एंथैल्पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है? सो हियर द डेल्टा सॉल्यूशन इज इक्वल टू 788 प्लस माइनस 784 दैट इज इक्वल टू 4 किलोजूल पर मोल. मतलब एक नमक का दाना खाते हो तो 4 किलोजूल पर मोल तुम्हें एनर्जी मिलती. बात समझ में आया? सो हियर the dilution of sodium chloride is accompanied by a very little heat change. बहुत ही छोटा सा यहाँ पर मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा कि sometimes what happen, तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलता. जब पेट खराब हो जाता है तो पुराने लोग कहते थे कि जाते यू शुड ड्रिंक लेमन जूस और यू शुड टेक सॉल्ट वाटर, यू शुड ड्रिंक दैट सॉल्ट वाटर. Its rate of changing is very slow, and since it produces a very little amount, 4 kilojoule per mole, you can understand 4 kilojoule per mole बहुत ही कम अमाउंट में तुमको ये देता है. लेकिन जैसे ही तुमको बहुत तुरंत एनर्जी की ज़रूरत है तो ग्लूकोज जो या तो शुगर क्रिस्टल को आप खा लो, शुगर क्रिस्टल का पाउडर बना करके उसको शुगर सॉल्यूशन बना लो, शरबत पी लो, then you will get instant energy. Why I am telling you these all the things? Because this lattice enthalpy and the solution enthalpy is related to each other. Solution enthalpy is equal to lattice enthalpy plus hydration enthalpy, and here we have calculated this lattice enthalpy. One more thing I want to just tell you about this diagram. This is an enthalpy diagram. It represents you that how these things happen. कैसे सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस
सोडियम गैसियस से फिर सोडियम केटायन, क्लोरीन गैसियस से half Cl2 से Cl, Cl से Cl gaseous and then Cl minus and then whole this process. This is an enthalpy diagram. Whenever you get a knowledge about these whole things, that time you will really have good things to understand really. So we are understanding now that why we are taking, and the olden peoples means in the 19th or 18th century, whatever the things has been occurred at that time, whatever the things they have said, it is an experimental proof. It is experimental, 100% experimental. Don't think that whatever the things are written in this Rig Vedas are just away. It's not written like that. Each and everything is an experimental proof. Still yet NASA is doing research on that Rig Vedas, medical science is doing research on that Rig Vedas. So whenever you read something, you get a concept of something, but try to take this as in a skill oriented knowledge. Okay? Now the next topic is spontaneity. We will move towards that also. First of all, in the lattice enthalpy, if you have any doubt, then you should drop your doubt into the comment box section so I can solve your all doubts. So this was our lattice enthalpy. So our new topic is spontaneity. Have you heard this word? कभी आपने सुना ये word spontaneity? Okay, let's come first of all. First law of thermodynamics. क्या था first law of thermodynamics? Delta U is equal to Q plus W. मतलब heat और work done का जो sum था. लेकिन आपने कभी सोचा किस डायरेक्शन में काम हो रहा है? Work done, it is on left side, right side, system surrounding where the work is done. कौन से डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, डाउन साइड. देयर इज नथिंग रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन दिस रिएक्शंस. मतलब कौन से डायरेक्शन में हो रहा है उसके बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बताती. नाउ क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज दिस स्पॉन्टेनिटी. इसका क्या यूज है, क्या मतलब क्या है, स्पॉन्टेनिटी पढ़ाने का मतलब क्या है. अब मैं आपको बताता हूँ. जब हीट अनडायरेक्शनल है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आपको ये तो नहीं पता है. ये सारी चीज़ें जो भी आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा, हीट एंड वर्क, व्हाटएवर द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट वाज अनडायरेक्शनल. अनडायरेक्शनल मीन्स, you can ask me, sir, what is the meaning of undirectional? Means from which direction it flows. It doesn't give you the determinations of the direction. It gives you magnitude, yeah, plus, minus, endothermic, exothermic, it shows. But direction it doesn't gives you the information about the direction. कि direction क्या है, नहीं है, वो हमें नहीं बताता है. So this spontaneity means it is the physical change or chemical change, or means in which direction the gas is expanding. कार्बन डाइऑक्साइड अगर चल रहा है तो किधर चल रहा है, एक्सोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा. हैव यू एवर थॉट, वन थिंग यू टेल मी, always you understand about the heat flows from hot body to cold body. yes, ये डायरेक्शन आपने पढ़ा था ना, कि मतलब हीट जो है कभी भी कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ नहीं आएगा. ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इवन मुझे तो लगता है आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड से ही ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी कि कभी भी हीट का जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही चलेगा. राइट. लेकिन अगर मैं आपको बात कहूँ कुछ ऐसा कि मतलब आपको ऐसा लगे कि जो भी गैस है अगर एकाएक
कोई भी गैस अनडायरेक्शनल चेंज हो रहा है, एसी अगर हम रूम में चलाते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन वी जस्ट ऑन एसी इन आवर रूम? हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कूल ना? आपके रूम में पूरा गर्मी था, आपने एसी को ऑन किया, कुछ देर के बाद आपका रूम ठंडा हो गया. वेयर इज द हीट? हीट तो फ्लो होता है. देखना घर में जनरली क्या होता है, जो सीलिंग जब गर्म होता है तो वो गर्म हवा, अगर फैन ऑन रहती है तो गर्म हवा आते रहती है, लेकिन जब आप एसी ऑन करते हो तो सारी गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जिसको आप लोगों ने कन्वेक्शन पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड में, शायद 7th में ही था. कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 मीडियम है हीट के. तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन कहाँ गया भाई साहब? जो आप कह रहे थे हॉट से कूल की तरफ, कूल से कोल्डर से हॉटर की तरफ कैसे गया? जस्ट आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. इट्स नॉट अबाउट so much thing to relate the spontaneity occurring. I just ask you a question. चलो मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. फर्स्ट टाइम इन द यूनिवर्स when the one drop of water was, just suppose कुछ नहीं था, ये पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में स्थिर एक स्टार टूटा. As the star has been broken, it has converted into the pieces of stars, and this solar system were formed. Biggest star is that sun, and the rest of the star, it has been cooled. It have taken a million to billion and trillions of years to cool, and then there is a beautiful planet called Earth. In that Earth also million to billion of years it has taken to just form that where a human being can survive. So that was the first thing कि जो वाटर का ड्रॉपलेट्स आया. ये वाटर का ड्रॉपलेट्स कैसे हो? अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ. आप एक रूम को बंद करके 2-4 साल के लिए चले जाओ कहीं दूसरे जगह. बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब जो लोग NRI होते हैं, अपने जो इंडिया में जो उनका मकान होता है, या तो उसको भाड़े पे लगाते हैं, अगर कोई भाड़ा नहीं लेने वाला रहता है तो उसको लॉक करके वो लोग चले जाते हैं. तो 4 साल 5 साल के बाद आते हैं तो देखते हैं रूम में कहीं, मतलब सब कुछ क्लीन था बट कहीं पे वेट होने लगा था. सडनली वहाँ पे कहीं पे मॉइस्चर फॉर्म हो गया. हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये प्रोसेस संभव कैसे हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल? आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. अब वो पानी बन तो गया, लेकिन वो पानी डायरेक्टली अब गायब नहीं होगा. और अंडरस्टैंडिंग और नॉट? जैसे मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि अगर H2O है तो वापस वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिसोशिएट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है. ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल नहीं है ये. So spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external energy. जब तक, जैसे मान लीजिए वो फेनोमेनन जो मैंने आपको बताया कि अगर आप घर को लॉक करके जाते हो बहुत दिनों तक और आपके घर में कहीं पे पानी जम गया और वो पानी के ड्रॉपलेट्स अभी तक 4 साल के बाद आप आए और देख रहे हो वो पानी के ड्रॉप्स, तो क्यों नहीं वो पानी गायब? अब वो पानी को गायब करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी लगाना पड़ेगा. आपका रूम का फैन ऑन करना पड़ेगा, विंडोज ओपन करने पड़ेंगे, पोछे लगाने पड़ेंगे, कूलर से सुखाना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से, a spontaneous process is an irreversible process. Irreversible. और वो reversible तब होगा when you apply external energy on it. Spontaneous process is just, I just want to say only one thing about in which the reaction occurs very slowly. Spontaneous reaction is one which occurs immediately when contact is made between the reactants. अगर reactants के बीच में contact होगा तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर reactants के बीच में contact नहीं है then it is a very slow process. The things what we have to learn, when you mix two gases suddenly it will not come. आप खुद सोचो
तुरंत आपको थर्मोडायनामिक्स में आ जाएगा. जस्ट सपोज यू एंड थर्मोडायनामिक्स. क्या किसी भी स्टूडेंट को सडनली थर्मोडायनामिक्स आ जाएगा? तुरंत उसने ओपन किया, रीड किया बुक को, न्यूमेरिकल सॉल्व किया, फॉर्मूला बता दिया, इस फॉर्मूला पे बता लो, 4-5 न्यूमेरिकल्स बना लो, मीन्स यू नो द थर्मोडायनामिक्स. You try to come in the contact, but whatever the certain conditions are there, till that level if you not reach, then you and thermodynamics still are apart. Yeah, you are in contact, but you are not still mixed. You haven't got a deep knowledge about the thermodynamics. तो यहाँ पर जो मेन कहने का मेरा मतलब है कि अगर कोई भी दो गैसियस एटम हैं, अगर जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो रिएक्शन संभव है. तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है वो दोनों गैसियस को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वो लगते हैं. हाँ, उसके लिए समय लगता है. अगर वो तुरंत आ जाएगा, आपस में अगर कांटेक्ट हो जाएगा रिएक्टेंट्स के, तो इजीली इट इज द फास्टेस्ट रिएक्शन. लेकिन तुरंत इरिवर्सिबल रिएक्शन. अब कोई भी चीज़, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने 3 इडियट में देखा होगा, नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल. बहुत सारे करते रहते हैं ना, आमिर खान और वो जो एक और रहता है, नथिंग इज पॉसिबल. तो उसमें राजू रस्तोगी क्या करता है, कॉलगेट के पेस्ट को दबा देता है, बोलते हैं आप इसको अंदर डाल. इफ नथिंग इज पॉसिबल देन डू दैट. इट इज पॉसिबल. जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. बाय विच प्रोसेस द पेस्ट कैन बी अगेन पुल्ड इनसाइड. क्या हम उसके अंदर में वैक्यूम क्लीनर डाल दें ताकि वो पूरा उसको सोख जाए अंदर? कुछ ना कुछ प्रोसेस तो अप्लाई कर सकते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू से यू, when the two reactants comes in the contact, then product is easily formed. But when they are not in the contact, when they are in contact, immediately a reaction is formed. But when they are not in the contact, slowly at the normal temperature and pressure. कुछ लोग होते हैं, देखना, बहुत लोग कहते हैं कि जो नहीं भी पढ़ने वाला होता है, अगर वो भी 50 बार 60 बार पढ़े तो उसको भी कहें. एक स्टोरी है वरदराज की. वरदराज राम का एक स्टूडेंट रहता है, वो गुरुकुल में जाता है, वो पढ़ता है. गुरुजी बार बार उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं सीखता. अल्टीमेटली वो गुरुकुल से भाग जाता है और एक कुएं के पास जाता है. और वो कुएं के पास देखता है कि एक औरत जो है, मतलब प्यास लगी रहती है, तो प्यास पानी पीने के लिए जाता है वहाँ पर. तो वो देखता है कुएं से एक औरत जो है, मतलब वो रस्सी से उस बकेट को निकाल रही होती है. तो जिस स्टोन पे वो रस्सी जो है बार बार फ्रिक्शन होता है, जब रगड़ता है उस रस्सी, तो वहाँ पर वो देखता है कि उस स्टोन के अंदर में वो, मतलब वो होल हो गया होता है. अगर बार बार रस्सी के लगने से ये स्टोन जो है, इसका भी मतलब कुछ हो सकता है, तो अगर मैं बार बार पढ़ूंगा तो मेरा नहीं होगा. Then that student, that Varadaraja, has again went to that Gurukul and he had taken a good knowledge and became a great scholar. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो दो रिएक्टेंट है विच आर नॉट इन द कॉन्टैक्ट, एंड व्हेन दे आर कमिंग इन द कॉन्टैक्ट, नाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट विल बी नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, इट विल बी इरिवर्सिबल. अगर उसको तुमको रिवर्स करना है, देन यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल एनर्जी ऑन इट. सो दिस वाज आवर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ फेनोमेनन हैं. कितने लोग हिल्स पे वो वाटर का मजा लेने के लिए गए हो? झरना जो गिरता है, देखे होगे तुम लोग कि हिल्स में स्नोफॉल या वाटरफॉल जब होता है, तो कभी तुमने सोचा है कि वो वाटरफॉल का जो फोर्स आता है और किसी रॉक से वो टकराया, और या स्टोन से टकराने के बाद वो मतलब एनर्जी जैसे ही डिक्रीज होगा, चेंज होगा, वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है? कभी आपने सोचा? अदरवाइज जस्ट सपोज कि एक बॉल है मेरे हाथ में और मैंने खींच के एक दीवार के ऊपर बॉल को हिट किया, तो जैसे वो दीवार से टकरा वापस न्यूटन्स थर्ड लॉ वहाँ पे लागू हो जाता है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो एनर्जी का डायरेक्शन चेंज होता है, by analogy we may be tempted to state that
The chemical reaction is spontaneous, directional. This is a spontaneous reactions because the decrease in energy. अब क्या क्वेश्चन, अब एनर्जी तो घटेगा ना भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेफिनेटली एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा. इफ एनर्जी विल डिक्रीज, आप इसके लिए कुछ एग्जांपल्स चाहिए आपको कि सर कैसे आप कहते हो एनर्जी, तुरंत आप खुद सोचो. जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, इफ आई वांट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अमोनिया, you can see half N2 gas and 3/2 H2 gas gives you 1 mole of ammonia, and for that the reaction enthalpy is minus 46.1 kilojoule per. This is an exothermic reaction. ये सारे एग्जांपल्स जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के हैं. और ये जो आप देख रहे हो दैट इज रिएक्शन enthalpy, that is minus 46.1 kilojoule per. Here if I talk about HCl gas, half H2 plus half Cl2 gas gives you 1 mole of HCl and the reaction enthalpy is minus 92.32 kilojoule per. यहाँ पे ये भी देख लो. और थर्ड रिएक्शन है हमारा वाटर वाला. So here in the water H2 gas plus half O2 gives you 1 mole of H2O liquid form. For that the delta HR reaction enthalpy is minus 285.8 kilojoule per. Now here you can ask me the decrease in enthalpy. Here the enthalpy is being decreased by passing from reactants to product. You can see here because these all the reactions are exothermic reaction. कौन सा है ये सारे के सारे कौन से reactions हैं, exothermic reaction है. The decrease in enthalpy is passing from reactant to product shows an exothermic reaction. So here you can see these enthalpies. Now the postulates which driving force for chemical reaction. अब मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग एक चीज तो पहचान गए होंगे कि जैसे ही तुम लोग माइनस का सिंबल देखते होगे तो पता चल जाता होगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, राइट. If I talk about the endothermic reaction, then half N2 plus O2 is equal to NO2. लिख सकते हैं. Can you tell me what will be the reaction enthalpy? यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा? Just tell me the value. Plus or minus? Plus. Here it will be plus 33.2 kilojoule per. Which reaction is this? ये कौन सा reaction है? Endothermic reaction. Why? Here the delta HR value is in plus, so you can directly say it is an endothermic reaction. अच्छा, कार्बन और सल्फर को मिलाओगे तो कार्बन एंड सल्फर, ये कार्बन ग्रेफाइट है हमारा, और सल्फर कार्बन सल्फाइड CS2, ये जो है हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, राइट. और यहाँ पर रिएक्शन इंथैल्पी, हाँ यहाँ पर तुम पूछ सकते हो कि सर सल्फर कौन सा स्टेट में है, तो बता देता हूँ सल्फर भी यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है. तो ये जो है रिएक्शन इंथैल्पी तुम्हारा टोटल 128.5 किलोजूल पर. कितना होगा? 128.5 किलोजूल पर. तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये प्लस का सिंबल देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए these are all are. Which reaction can you tell me? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. These are endothermic reactions. ये कौन से रिएक्शंस हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आप लोगों को मालूम होने चाहिए. जैसे ही आप रिएक्शन एंथैल्पीज के वैल्यूज देखते हो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए, बिकॉज डिक्रीज इन एंथैल्पी विल गिव यू the contributive factors of spontaneity, but it is not true for all the gases. जितने भी केस होते हैं जो डिक्रीज इन एनर्जी होते हैं तो ये आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में जानकारी दी, लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं है. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आप लोगों को दो चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो रिएक्शन इंथैल्पी चेंज होते हैं वो क्यों घटते हैं, बिकॉज ऑफ द स्पॉन्टेनिटी रिएक्शंस, स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस. इस चीज को समझने की कोशिश करो. द स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली रिवर्स नहीं होगा. रिवर्स करने के लिए इसको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है. इसीलिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज आती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में निगेटिव वैल्यूज होती है. इट इज अ डिक्रीज इन एनर्जी एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज इंक्रीज इन एनर्जी. आई होप आप लोगों को ये स्पॉन्टेनिटी समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को ये स्पॉन्टेनिटी जो भी
फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहे तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप लोगों को बस सीधा सीधी क्या करना है, सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया, वो चीज़ नहीं समझ में आया, उसको आप ड्रॉप डाउन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो जो चीज़ आप पढ़ते हो ना उसका एक नोट्स बनाओ कि सर मुझे इस तरह से समझ में आ रहा है, मुझे 2-4 और नोट्स चाहिए। बहुत सारे वो आज की डेट में पढ़ने के लिए अब ये कोरोना ने एक ऐसा सिचुएशन बना दिया है कि बच्चे पढ़ सकते हैं, इस हालात में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रुकेगा। ये बात आप 100% ध्यान दे दो। अब खुद सोच लो, आईआईटी और नीट का एग्ज़ाम नहीं रुका तो आप लोगों का भी जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो नहीं रुकने वाला है। आप लोगों का भी जो नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम है वो नहीं रुकेगा। इसलिए मेरा सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यूटी करो। जितने भी नॉलेज गेन करते हो, जो टॉपिक का नॉलेज गेन करते हो उसका पीडीएफ डाउनलोड करो, उसके सम्स को बनाओ। अपना एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आता है एनसीईआरटी का, उसको देखो, उसको बनाओ। न्यूमेरिकल्स के बुक लो, न्यूमेरिकल्स के बुक में से उसको सॉल्व करो। नहीं आती है वो क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। Be safe, stay at home. Thank you.